the data, in which we have done, we have placed some specific devices, and if specific devices are not available, then get the data from their respective driver's mobile, and then continuously feed the information, and then started to track what actually the behavior is all about, how we are going to drive is being. Because the insurance companies are very much worried about that one. If someone is driving or mishandling the car, so obviously get a chance to have an accident, and obviously they want to give us some penalty on it. That was their business policy, but we have successfully done it with this one. Again, this is regarding to astronomical activities, the classical object detection, a constellation and the classical object detection. Sometime always you heard about the constellations. One born in Libra, this is something, is Taurus. Actually, it's all about the sun is divided into, the sky is completely divided into 89 to 98 divisions, and every part is called a constellation. What the interesting project was that if I give you an image of a sky, and if I am interested to know which constellation is all about, it is an upper minor, or it's a lower minor, or it's a Taurus, or it is a different constellations. So by that given image only, one can predict which constellation is that. And then this project further extended with the object detections. Now one can say, okay, what is the benefit of this one? It has two different angles to be. Okay, what will be the how we can make use of this research? Number one, we take usually the same images time to time for a 24 hours, for 48 hours, for 46 hours. And then we match that one. If any of the new objects comes in, we can find that there's something that was observed, and then can be named, because it is my target, it is my team's target to at least have some celestial object with Pakistan's name. Unfortunately, we don't have any. There are millions of objects, and they have named with a different their inventors, or their inventors नहीं कहना चाहिए जिन्होंने इसको set out किया, find out kiya. So obviously, but no one in Pakistan. Why? So we are trying to continuously get the image of a particular site, and then feed that, and then find the difference. If any of the new objects comes in, then we easily find. Sometimes we find a telescope, satellite, sometimes we find meteors, sometimes, but even we tried के meteoroids तो आराम से मिल जाते हैं कि at that particular instant कोई meteoroid आया और गुजरा, और उसके बाद फिर कोई सैटेलाइट्स आई जो पता चलती है कि आफ्टर सम टाइम, जैसा ये प्लेटो के साथ जो आपका 9th वो था आपका प्लैनेट के साथ भी यही हुआ था कि वो सब थोड़े टाइम के लिए नजर आया था, एंड देन इट डिसअपीयर्ड, एंड इट विल कम बैक अगेन आफ्टर 237 ईयर्स. तो वो आपको नहीं पता 237 ईयर्स तक मैं भी नहीं, एक लम्हे के लिए यार गायब हो गया. तो दिस इज द थिंग दैट वी कैन डन, बट एट द अगेन इन द बैक एंड द VWORLD cloud. Again, it requires a huge amount of the computation, huge requirement of the memory. So all is being done locally and at the VWORLD cloud. So this one. Coming then is again genomics birth defects data set. We also work on the genomics. One of my co-PI worked on it, and again they were all the genomics related details. I'm not so much in-depth knowledge of that one because I'm not domain expert of that. But obviously, one of the co-PI continues to work and use the genomic, this VWORLD cloud to get this genomics information as well. Again, very important project. One of my co-PI is working on the tsunami modeling, and Karachi is an advantage that it has a seashore to Gwadar. But unfortunately, its modeling never been done for the tsunami perspective. For example, for God forbid, if any of the earthquake comes, or obviously that will be backed by the tsunami. So in Karachi, if God forbid, if any of the circumstances come, so what the areas can be the safe side, and how we can be evacuated one. Example started from the Makran coast to Gwadar coast to, and then completely to Karachi. So this is the complete study is being done. And obviously, this is a part of the NCBC project as well. But again, important thing, without going in technical detail, the VWORLD at backend. So idea is that the diversity, the fact that, importantly, and all these are the big data, terabytes of a data we have, and we have to simulate it, we have to predict that, we have to emulate that within the given time. A lot of required of huge memory.
तो ऑब्वियसली इफ आई सेपरेट इट, तो अगर मेरे पास ये 10-12 प्रोजेक्ट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ यही करता, तो मुझे 10-12 बड़ी जीपीयू की मशीनें चाहिए होती है, वो भी बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, वन यूटिलाइज लिमिट भी नहीं कर सकता था। तो इज अ सेंट्रल लोकेलिटी अवेलेबल, वन कैन come up with that one and use that one accordingly. So need the cloud is everywhere, and we have to. When we talk about the National Center of Big Data and Cloud Computing, NCBC is a BigC conference, and you all are people involved with the big data. And this is not is the thing that big data को सिर्फ आपके पास मौजूद है, आपको उसको हैंडल करना है, उसको आपको स्टोर भी करना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, उसको फिल्टर भी करना है, उसको सेव भी करना है, उसमें रिपोर्टिंग भी करनी है. एंड नथिंग है कि एक दफा आपको मॉडल नहीं करना, यू हैव टू कंटिन्यू विद हिट एंड ट्रायल मेथड्स. हो सकता है आज मैंने एक मॉडल किया, ट्राई किया, तो वो मॉडल मेरे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, तो कल को मैंने दूसरा किया, उससे अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ, या आपके पास और डाटा आ गया, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अगेन. So this is the thing, cloud is everywhere and we have to. This is a quick who is using it. So I'm just speaking that not well. And this is all about the thank you. This is some of the projects that I've highlighted, but this is the, if you have any questions, so please. My question is, do you have any plan to provide your services globally? Yes, it is globally available, but we have a limited, again, when you talk about to expand yourself globally, right now it is available on internet. So it means virtually is available everywhere. But we are limiting ourselves only because of the requirements. We are targeting the industry or academy of Pakistan first, number one. Number two, if I get, we are just for we are trying to get have an investment or have some time of the at time of the further funding that we can extend it. So obviously, we're most welcome to extend it. Right now, let's suppose 40 users को accommodate कर रहा हूँ my infrastructure. With 90% efficiency, if I have doubled it, so obviously it will be able to accommodate more. The thing is that, but with a given number of users, limited resources, we are just have a priority to get first the university, the research institutes, and the industry that is involved in the research activities. Okay. My second question was, in case of hardware failure, cloud में होता है, so do you have any backup project? Yes, obviously it's a part of that one. Okay. I can classify it as a tier 4 architecture. Okay, thank you. Obviously, पूरा backup का पूरा mechanism है at all levels. आपने ये बताया कि रैम जो है आपकी 3 टेराबाइट की है, आपका स्टोरेज कितना वो मैंने यूज किया? It is around 70 to 80 terabytes. और एसएसडी पे कितना है? वो 50-50 है, 50-50 है. वो यूजेबल आपको जो बता रहा हूँ वो 70 to 80 terabytes है. इट मीन्स कि हमने RAID 5 भी कॉन्फ़िगर नहीं किया. वी आर वर्किंग ऑन द RAID 1 एग्जैक्ट डुप्लीकेशन टू मेक द लॉस का, हाँ, तो वो करना पड़ता है. ठीक है. तो दूसरा ये था कि आप बताइए कितना कंफर्टेबल हो AWS की प्राइसिंग से आप? ये मैं आपको देखें, एक्चुअली हमारे जो प्लान्स है ना, जो हम प्राइसिंग है वो वेरी करते हैं. हम स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट फॉर द किट इनिशिएशन के वो उसकी एक वो रहे. फॉर द इंडस्ट्री वी आर एक कोटेशन के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ तो वी आर 1/4 एक स्टडी के 1/4. और ऑब्वियसली इन PKR तो अगेन तो आपको फॉरेन एक्सचेंज ही पड़ रहा है. अगर वही जो आपको जो S2 का इंस्टेंस है मेरे पास एक कंपेयरिंग के लिए, AW का भी इंस्टेंस है जो मैं उसको मंथली जब देता हूँ दैट इज 25,000 फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट. वो यूज़ करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उनको कहा, तो वो 25,000. और यही अगर जब मैंने अपने पास से कंपेयर की विद हायर कॉन्फ़िगरेशंस तो वो मुझे 7 to 8,000 पड़ती है. जो हम क्लेम करते हैं आप 7 to 8,000 पर मंथ ले लीजिए. अच्छा, दूसरा ये था कि आपने जीपीयूज भी रखे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इस वक्त जीपीयूज जो मेरे पास मौजूद है वो 14 जीपीयूज है, 14 जीपीयूज एंड ऑल आर वर्चुअलाइजेबल. और सीपीयूज कितने? सीपीयू कोर्स जो हैं वो इस वक्त तो क्योंकि हमारे मेरे ख्याल से आई थिंक 400 कोर्स से प्लस है. और एक सवाल और है कि बताना चाहें तकरीबन कितना कॉस्ट किया था, अगर आप नहीं बताना चाहते तो? नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे कोई इशू नहीं है. आई एम वेरी ओपन. इसमें जो मुझे सिर्फ अगर जो रैक्स की बात करूं दैट वाज अराउंड 2.25 करोड़. लेकिन इंटरेस्टिंगली पता है क्या, फिर 1 साल बाद मैंने दोबारा उनको एक्सटेंड करने की कोटेशन मांगी. उन्होंने मुझे 4 करोड़ दी, तो मैंने कहा 3.5 करोड़ में मेरा उठा लो. तो उस पर मैंने उनको बोला कि इतने थोड़ी बड़े. लेकिन ऑब्वियसली आई वाज लकी एट दैट टाइम कि ये जो प्रोक्योरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्विकली हो गई. और डॉलर उस वक्त अराउंड फ्लोटिंग वाज 180 अराउंड.
तो at that time we were able to procure and complete the whole process. So that's why we got cheaper. Right now it is having the big. मेरा CPU आपके हवावे के हैं जो नहीं Huawei के पहले थे वो भी मौजूद हैं. It's all HP.